Checking operator dictionary to print this. Get a combined dictionary here. And ठीक है ये एक है. I wanted to cover one more thing. एक है basic but it's important. For example अभी मुझे empty list बनाना है, so मैं bracket डाल देता हूँ खाली. एक मुझे अगर tuple बनाना है, so what I can do, I will type the print e. of a print type of b. ये एक टपल बना. अगर मुझे एक empty dictionary बनाना है, तो what I can do is simply this and print the type of this dictionary मेरा. बट अगर मुझे सेट बनाना है, empty set, तो I can't use this only because set और dictionary सेम लगते हैं. इसमें बस की वैल्यू. तो सेट बनाना है तो I will have to use this. सेट का जो है उसमें I have to pass this. एक empty बना and print type अगर मैंने बनाया तो I will get a empty set. Yeah. So this is the common syntax. एक और ऑप्शन है, if you want to make list ऐसा बनाना है तो you can just do this. जैसे सेट में किया वैसे लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं. एंड फॉर टपल यू कैन जस्ट पास द थिंग एंड इट विल बी अ टपल. डिक्शनरी के भी सेम थिंग. सी इक्वल टू डिक्शनरी किया मैंने, गेट द सेम डिक्शनरी ये आएगा. यू कैन जस्ट टाइप गेट दिस थिंग डन. एंड बट एक और थिंग आई वांटेड टू कवर. If you want to note this down, you can write this. I will give you 2-3 minutes if you want to type this. Then I will continue. I will start at 111. I hope you have covered. I'll continue. So और एक चेंजेस अभी समझो मैंने a इक्वल टू मैंने. Man, just 2 minutes. Yeah, okay. Yeah. नहीं नहीं. I'll wait for 2 minutes.
Are you done? Yes. Yeah, sure. Okay, I will continue. अभी ये समझो मैंने a equal to 1 असाइन किया. This is the symbol of the tuple. What if I printed the type of it? Type of a. Then it will be ये जो भी इसमें डालोगे ना वो इस पे असाइन हो जाएगा. Like 1 किया तो it will. So a single element tuple is ऐसे not allowed. You खाली ऐसे bracket करके रख दे तो not allowed. So you want to assign in the tuple, then what you will have to do? 1 डालो या कुछ भी डालो single element, and then you will have to pass a comma. Then if you type it, then print the type, then it will be a tuple. So we will ऐसा single लोगे कि because in input most of the time you have a doubt, Delchin? Yeah, I wanted to ask, what if we typecast A as a tuple? If you typecast it as a double, let's see. So वो comma डालेगा if I am not wrong. Tuple. Uh, int object is not it, this iterable. So yeah, वो error दे रहा है. You will have to put this. Okay, thank you. Yeah, even I was not knowing this, so thank you. So yeah, you can ये one हुआ खाली, तो then you will have to pass this ऐसे comma करके, and then it will be an this tuple. ये you have to make sure, because in machine learning and most of the time you might see this कि single value tuple है, and then this thing might happen. So कभी कभी confusion होता है. You expected it as a tuple and then something might happen. So one thing. ठीक है, you can note this. Give you 1 minute, then I will continue in another topic. ठीक है, अभी ये मुझे एक और चीज़ करना था. देर इज समथिंग नोन एज ट्रूटी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू. इफ आई एम pronouncing it करेक्ट, इसको मैं सेल करता हूँ. सेल टाइम मार्कडाउन. सो इसमें क्या रहता है, अभी जो भी मेरा नॉन एम्प्टी सीक्वेंस है, मेरा नॉन एम्प्टी एल एस टपल वगैरह, दैट इज ऑलवेज इवैल्यूएटेड टू ट्रू. एंड इफ आई हैव समथिंग जैसे एम्प्टी वगैरह है, तो इट इज़ ऑलवेज इवैल्यूएटेड टू फॉल्स. जैसे रेंज है जीरो मेरा, या नंबर जीरो, या एनी न्यूमेरिक टाइप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग, इट इज़ ऑलवेज इवैल्यूएटेड एज कंसिडर एज फॉल्स. सो इसका इफ यू वांट, आई हैव ऑलरेडी टाइप दिस. सी बुलियन क्या करता है, बुलियन विल रिटर्न कि ये ट्रू है कि फॉल्स. फॉर एग्जांपल आई प्रिंट दिस. सो ये वन है, ये सम, तो ऑल ऑफ दिस विल रिटर्न मी ट्रू. ठीक है, ये क्या रहता है, इसको ट्रूथ वैल्यू ये बोलते हैं, ट्रूथी वैल्यूज बोलते हैं. लाइक ये ट्रू तो ठीक ही है, इट इज ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वाला, बट इफ यू हैव पास दिस. सो फिल्टर में कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि फिल्टर में पास किया बट ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ, फिर भी वाई इट्स वर्किंग. सो ये सम दिस एच के यू शुड नो कि ये अगर ऐसा कुछ भी सिमिलर यू पास, then it will return this true. So if you want you can copy this out, and इधर ये सेम चीज़ में अगर you pass नॉन, अगर empty कुछ पास करके देखोगे तो it will, for example अभी मैं करता हूँ, so this is false. मैंने empty पास कर दिया, this is false. So you can see अभी मैंने समझ ये empty string पास किया, तो इधर देखो, इधर false है. So you have to be careful ये केस में. ये look simple but most sometimes you get this kind of errors in this. So if you want you can note this down. Then I will wait for 5 minutes, and I will continue at 121. I will continue.
नयन आई गेस तूने सेट का नहीं बताया। सेट का कौन सा इधर? सेट मेथड क्या होता है? सेट सेट बताया ना मैंने, अभी मैं बताता हूँ। सेट मैंने बताया था, वो यूनियन पता है, फर्स्ट डे पे मैं बताता हूँ 1 कॉमा 2 अच्छा, कॉमा हाँ 3। हाँ, या तो सेट में अगर मैंने कुछ ये किया कॉमा करके 3 अगर डुप्लीकेट किया है ना, प्रिंट सेट, तो मुझे सेम आता है। सेट हमेशा बाय डेफिनेशन क्या डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। दिस वाज सेट, तो इस पे डॉट यूनियन डॉट इंटरसेक्शन परफॉर्म किया था, दिस वाज सेट। ओके। या यू कैन, मैंने नोटबुक भेजा उसमें, यू कैन गो बैक एंड सी एंड डाउट हुआ तो अगेन संडे को भी ले रहे कि संडे को भी देखे। जैसे क्लासेस है, जनरेटर्स आई वांट टू कवर अगेन, तो जनरेटर्स, क्लासेस, फाइल ऑपरेशन एंड एक लोकल एंड ग्लोबल का एक कॉन्सेप्ट रहता है, नॉन लोकल एंड ग्लोबल का LEGB रूल करके रहता है, दैट आई वांट टू कवर इट ऑन संडे। एंड देन जो भी तुम लोग के डाउट्स रहेंगे दैट आल्सो आई विल कवर ऑन संडे। सो अभी के लिए इतना, आई विल कवर। इसके बाद थोड़ा और बेसिक करना है, फिर ट्राई एक्सेप्शन बता दूंगा, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली वगैरह, एंड देन आई विल एंड द सेशन टुडे, एंड देन संडे को जो बचता है मेरे सिलेबस में जो कवर करना है दैट आई विल कवर। सो या, एंड संडे यू कैन आस्क मी एनी डाउट, इफ और डाउट्स आते हैं तो पर्सनल मैसेज पे भी जो पीपल कीप आस्किंग, सो दैट्स ओके विथ मी, यू कैन डायरेक्ट मैसेज में, नॉट एन इशू। सो मैं और 2 मिनट लेता हूँ, आई विल स्टार्ट एट 1:21 I will start. If you want to copy, you can copy, and you can play with this. I will continue now. I hope you are done. इस पे गया next now. There is a library, different kind of libraries. For example, yeah, I want to convert a number into binary. So you have the bin library करके, yeah, if you want to convert something to, for example, hex. So hex के लिए what you can do, hex के लिए you can 100 if I pass, so you get the 0x64. So this is 100 is in 10 bases and hexadecimal 64. So different kind of, you have the octal function. Octal function के लिए you can pass this 100, any number I can pass actually. So you get this. Yeah, and then if you want to manually assign, then what you can do is you can simply write the variable name and you do this. For example, 0 binary 1 0, and I try to print this. So this is what this is 1 2. This is should print you b किया मैंने, तो दिस विल प्रिंट 2, क्योंकि 0 b किया तो इट टेक्स दिस एज अ बाइनरी. सो वैसे ही इफ आई राइट दिस, what I can do is you can write this. अभी समझ ओ 0 o लिया मैंने, सेम कॉपी पेस्ट किया तो it will be hexadecimal. Or if I write the octal, then this, the octal में 0 o is octal, and if I comment this out,
and print this. So 0x डाला तो this will consider this as b equal to या something you can assign, and वो hexadecimal वगैरह that can cover. So one alternative method is if you want to use the int function. So int में what have you pass one number or something, but if you pass a string and then for example a and then I pass 16, so ये मुझे ये करके देगा. This has to take a string, not this. अगर base 10 के अलावा कुछ करना है, for example if I pass 4 समझो, और 4 में I want to see hexa, तो it won't be able to do this. कि explicitly base मैंने किया है तो it needs string. जो एक्सप्रेसिव स्ट्रिंग यहाँ पे बेस पास कर सकते हैं, यहाँ पे वो जो भी नंबर कन्वर्ट करना है इधर से 10 से कन्वर्ट करना है, दैट यू कैन यूज दिस. एंड देयर इज वन मोर थिंग नोन एज इवैल. फॉर एग्जांपल इवैल है मेरे पास एंड आई हैव दिस सम नंबर्स एंड स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस. जैसे हम इनपुट लेते हैं, इफ यू टेक इनपुट लाइक 2 + 9, इफ यू हैव टेकन द इनपुट, तो ये क्या करेगा, ये इसको ये करेगा, इवैल्यूएट करेगा एंड देन इट विल फाइंड आउट कि 2 + 9 क्या है. और एग्जांपल 2 into 9 2 raised to 9 क्या है, that and all those stuff you can do. For example you have eval and you pass it in string, कोई भी function है आपका, sum है मेरे पास, sum 1 2 3. So this sum is a standard function जो ट्रिपल एक्सेप्ट करता है and returns me the sum. So ये मैंने string में डाला है, इसको evaluate करना है तो you can use the eval keyword to evaluate any kind of expression and then you can run. But eval में only one thing is you can't use equal to. For example if I use the equal to assign 21 something, so this won't work. Equal to is not allowed in eval. The assignment something you can assign. अभी मैंने इधर ये sorry इधर अभी समझो x लिया होता मैंने, x equal to 0, so this will throw an error. ये equal to is not allowed here. So these are the simple function, but ये बहुत powerful होते हैं in certain use cases. So I'll give you again 5 minutes, 1:30 तक. You can play around with this. You can note this down, and then मैं try except पढ़ाऊँगा. Try except exception के बाद I will leave you guys. If you have any doubt, you can ask. Then 1:30 we will continue. Yeah, sure, I can explain the int. Int देख basically क्या लेते हैं? I help में print कर देता हूँ, it will be more helpful. Print देख int में क्या लेता है? It can take this base equal to 10 रहता है by default integer का, तो हमेशा अपने को 10 में रिटर्न करता है. बट एक एग्जाम्पल मुझे एक्सप्लिसिटली कुछ बेस डिफाइन करना है. ऑल द वैलिड बेसिस आर फ्रॉम 0 to दिस. 0 इज ऑल्सो वैलिड बेस एंड ये करता है 2 to 36 है. तो 2 to 36 में ना कुछ भी बेस डाल, तो इधर यू कैन मेंशन, जैसे मैंने इधर 16 किया था, यू कैन 2 से लेकर 36 तो यू कैन मेंशन एनीथिंग एंड जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज है इधर. जैसे अभी मैंने इसमें बेस मेरा ये है, ये देखिए ये 0 मैंने स्पेसिफाई किया, तो ये 0 भी इधर मैंने डिटरमाइन किया, जैसे ऊपर था मैंने असाइन समथिंग, किधर गया, हाँ इधर 0 भी 110 था. दिस इज बाइनरी. ऑक्टल के लिए ओ रहता है, एक्स रहता है, तो इफ बेस 0 वो खुद डिटरमाइन कर देगा. बट इफ़ यू वांट टू डू दिस, बहुत सारे मुझे चाहिए अलग अलग टाइप के बेसिस, तो यू कैन डू दिस इज यू कैन जस्ट टाइप इट आउट. जैसे अभी तो ये स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग डालने का है, एक्सप्लिसिटली मेंशन द बेस कि ये 16 है या 8 है या समथिंग. तो यू कैन चेंज अ नंबर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग यूजिंग द इंट फंक्शन. So I hope you understood. Shubha Yeah, sure.
I will continue. There are errors like in Python there are three types of error. You can have compile error. अभी कंपाइल एरर बहुत ऐसा अजीब लगता है लोगों को सुनने को कि पाइथन में तो इंटरप्रेटर है, कंपाइल एरर कैसे होता है, बट पाइथन में इट्स ऑलवेज कंपाइल टू अ बाइट कोड, लाइक डॉट पी वाई से फाइल बनता है हमेशा, एंड डॉट पी वाई की फाइल हमेशा रन होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव चेंज नथिंग इन द कोड, तो वो देखता है कि मेरा डॉट पी वाई फाइल है, वो देखता है कि कुछ चेंज हुआ है कि नहीं. पहले से मैंने रन किया था तो कुछ चेंज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो वापस इसको ये नहीं करेगा, बाइट कोड जनरेट करेगा, वो पुराना बाइट कोड ही लेगा और वो पुराने बाइट कोड में इंटरप्रेट करेगा. सो पहले वो कंपाइल होता है, इसलिए अपने को जो भी सिंटैक्स एरर्स रहते हैं, जैसे सिंटैक्स एरर्स है, इधर कोई भी अल्फ़ाबेट गलत डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो यू गेट एन सिंटैक्स एरर. देन यू हैव लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स जैसे अभी जैसे लीप का एग्जांपल था, लीप ईयर में व्हाट हैपेंड, यू बहुत लोगों ने ये इफ एक्स ये %4 डाल दिया था खाली, और डिवाइड मॉड्यूलो 4 डिवाइड बाय 4 होता है तो यू गेट द लीप ईयर या तो नहीं. तो दिस वाज रॉन्ग बिकॉज यू हैव टू कंसिडर 100 एज वेल एज 400 ऑल्सो इन योर यूज केस. ये क्या था, तो लॉजिकल एरर फॉर लीप ईयर you have to consider. And then there is a runtime error, which we frequently see in Python. So it is in Python it is possible that you can handle the runtime error. For example, if जैसे कॉमन ज़ीरो का ही बात हो रहा था जब भी वो मैप वगैरह पढ़ा था, तो फॉर एग्जांपल अभी वही लेता हूँ. एग्जांपल आई हैव 2,0, सो ए को 2 दे दिया, बी को आई असाइन 0, एंड देन आई ट्राई टू प्रिंट a/b, and then I accept, and then I try to print error occurred. So ये क्या जीरो था, एरर आया. नहीं तो अगर मैं ऐसे नॉर्मली करता तो क्या होता है, 2/0 किया मैंने, तो आई वुड हैव गॉटन जीरो डिवीजन एरर, राइट. अगर मैं ये करता है तो जीरो डिवीजन एरर इज वेरी कॉमन. कैलकुलेटर वगैरह कुछ बनाते हैं, फिर इनपुट जीरो एंड यू हैव डिवीजन, देन यू विल ऑलवेज गेट दिस जीरो डिवीजन एरर, एंड बहुत वेरी दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर दैट एनीबडी कैन सी. सो दिस इज एक्सेप्ट. अगर मुझे चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन है, तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन पास वन मोर थिंग, आई कैन पास एक्सेप्शन एज ई, and I can like pass it e सीधा pass किया मैंने, तो you get the name of the error, like division of by 0 is the error thing. So you can pass this, or you can just write इसमें you can just write this both the syntax are valid. अगर कुछ ये करना है, इधर खाली error print होगा, खाली error occur. So both syntax are valid, there is no issue in that. So I'll इसको दूसरे ब्लॉक में रखता हूँ. Yeah, so you can copy this out, you can try out कोई एरर लाने का चाहिए तो बिना इसके ट्राई टू गेट एन एरर. लाइक फॉर एग्जांपल ये है कुछ आउट ऑफ बाउंड एरर थे, लिस्ट में 5 एलिमेंट में कुछ ट्राई करो अलग एलिमेंट एक्सेस करने का, या तो ट्राई टू गेट दैट काइंड ऑफ एरर एंड सी व्हाट काइंड ऑफ एरर्स दैट यू गेट. So there are different kind of errors and उसको you can handle, but syntax errors you won't be able to handle here. Syntax error है तो वो सीधा error फेंकेगा. You won't be able, there are exceptions in syntax errors also, like for example you can have this eval में भी कुछ कुछ होते हैं, so that is considered syntax error, but eval में that you can handle the exception, but in most of the cases syntax error they can't be handled. So you can copy this out. मैं देता हूँ तुम लोग को 5 मिनट देता हूँ, try to get different kind of errors, and for example this will handle most of them, and try to print e करके देखो कौन से टाइप के errors आते हैं which can get handled. This is known as critical statement, ये वाले पार्ट जिसमें आ सकता है एरर, तो यू ऑलवेज एनकम्पास दिस इन द enclose this in the try except block, where you are like most of the chances are there कि इधर एरर आया आपको. So I'll give you time till 1:40, you can play around with this.
I hope you're done. I will continue. If somebody wants me to wait, then let me know. So for example, अभी वापस ये लेता हूँ, same thing मैं copy करता हूँ. And for example, you have this, like try में you have some operation, like you have to open a file. For example, file open हो गया. Then you have to do some operations on it. जैसे कुछ operation लेना है मुझे वगैरह वगैरह वगैरह. I have to take some operation. A/B हो गया, and then you have to do, you have to take an input like k int input, and then you can enter a number, like enter a number. And then what I want to do is मुझे फाइल ओपन हुआ, तो इररिस्पेक्टिवली कि मेरा ये हो कि नहीं, अभी मेरा समझो मेरा है या एरर नहीं, फाइल ओपन किया, दिस टू आर द क्रिटिकल स्टेटमेंट जिसमें वो हो सकता है मुझे एरर आ सकता है. तो वो पर मुझे क्या चाहिए, फाइल क्लोज हो, मेरा एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन नहीं आए, आई वांट कि मेरा फाइल क्लोज हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. फाइल ओपन होता है तो ओपन पॉइंटर इज लाइक अ डैंगलिंग पॉइंटर बोल सकते हैं, जैसे सी में डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं, वैसे अगर ये हो गया फाइल ओपन देखे तो डेट कैन बी रिपरकशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो व्हाट यू कैन डू, एक्सेप्शन, विल सी एक्सेप्शन देता हूँ एस ई, एंड देन प्रिंट एरर रखा है, प्रिंट ये करूँगा, टाइप करूँगा, एंड देन आई व्हाट आई वांट फाइनली करके एक ब्लॉक रहता है इसमें, finally, and then what it will do is it will just accept this, print file close. So for example अभी मेरा 0 है इधर, इधर आया, ये क्या हुआ, इधर फाइल ओपन हुआ, मैंने a/b किया, a/b किया, तो b 0 था, तो ये लाइन के बाद ना नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं, वो इधर एरर आया ना, तो इधर एरर आके सीधा एक्सेप्ट पे चला जाएगा, वो सीधा एरर अकर्ड एंड डिवीजन बाय एरर 0 एरर, ये इधर चला गया सीधा एग्जीक्यूशन मेरा, ये नेक्स्ट लाइन पे गया ही नहीं. तो इसके नीचे अगर समझो फाइल क्लोज लिखा रहता मैंने, प्रिंट के नीचे लिखा रहता समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट पास, एंड इधर मैं लिखता हूँ प्रिंट फाइल क्लोज. सो वो क्या हुआ, ये हुआ फाइल ओपन हुआ, मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, मुझे फाइल क्लोज करना था नॉर्मली, अंदर वो सम अदर एग्जीक्यूशन, बट एक स्लैश पे एरर है तो वो इधर चला गया और वो ये मेरा फाइल ओपन ही रहेगा. सो दिस इज एन इशू. सो मुझे क्या करना है, मुझे एरर आए या ना आए, व्हाट आई वांट इज इधर जाना चाहिए. अभी मैंने प्रिंट किया फाइनली, एंड समझो इधर एरर, एंड नंबर 5 टाइप कास्ट किया, नो एरर, यू गेट फाइल क्लोज. तो इररिस्पेक्टिवली कुछ भी करो फाइल क्लोज जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये है, एंड सॉरी, एंड नाउ व्हाट आई वांटेड कि मुझे, मैं जीरो डिवीजन सोच के रखा था कि देयर वाज जीरो डिवीजन, बट नाउ व्हाट हैपेंड इज यू गेट, फॉर एग्जांपल मैंने अल्फाबेट डाला, तो ये क्या होगा, टाइप कास्ट नहीं होता है, इन कैन नॉट बी दिस अल्फाबेट, मेरा टाइप कास्ट नहीं होता है किसी में, इन पर कि बेस 10 लिटरल नहीं है इसमें, एच वगैरह. तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, वो भी एक्सेप्शन इसमें आ गया, प्रिंट ही हो गया. बट इफ आई वांट, एंड देन फाइल क्लोज हो गया मेरा, बट इफ आई वांटेड टू हैंडल अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन, लाइक दिस कैन बी कॉज एन इशू, एरर अगर मैंने खाली इन जनरल किया एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस एरर, मुझे लगा मेरा क्रिटिकल स्टेटमेंट खाली ये है, मेरा क्रिटिकल स्टेटमेंट ये नहीं है, but then except exception is he will like get all the errors, will accept all the errors. So example, if I write except exception, except the zero division error, this is the zero division error लिखा मैंने ऐसे ही, and I can write a custom message कि I got a zero division error, and then this are the general errors that you can find. तो you type, अभी मुझे समझो ये है, अभी there will be number किया तो there is no error, but if I write this 0, so ये क्या है, ये ब्लॉक में क्या, नॉट दिस ब्लॉक. सो हमेशा क्या करते हैं, जो भी तुम लोग के जनरल जो भी रहते हैं, जो नॉर्मली एक्सेप्शन आ सकते हैं, लाइक कैलकुलेटर में जीरो आ सकता है, या फिर तो जो भी मेन है, अभी इनपुट में आई नो कि इसमें आएगा एरर. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टाइप कास्ट करने का ट्राई करता हूँ, इंट नो वैल्यू एरर आएगा, तो आई कैन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टाइप वैल्यू एरर इधर, आई कैन एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट वैल्यू एरर्स, see, and I can, if I'm not using this, I can just do is print value error. So डिवीजन में अभी ये हुआ, ये क्या हुआ, ये इधर ही आ गया, तो जीरो डिवीजन ही आ गया. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जीरो डिवीजन नहीं करता एंड टाइप समथिंग, सो इट विल प्रिंट द वैल्यू एरर, क्योंकि वैल्यू एरर के ब्लॉक में जाएगा.
एंड इफ सम अदर एक्सेप्शन occurs तो ये दोनों में नहीं कवर हुआ तो ये इधर कवर हो जाएगा. तो दिस इज ट्राई एक्सेप्ट and you have the finally block. So you can copy this. If you have any doubt, let me know. I will give you 5 minutes. अच्छा ऑल्सो इसमें ही एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ. देर इज एल्स ब्लॉक करके भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा फाइल ऑपरेशन हुआ, ओपन हुआ, दिस गॉट सक्सेसफुली डन, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली. थोड़ा 2 मिनट इधर देख लेना जो भी कर रहे थे. सॉरी प्रिंटर. अब समझो मेरा प्रिंट A/B है, ये सक्सेसफुल हुआ, ये सक्सेसफुल हुआ. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज मैंने फाइल ओपन की थी, उसमें आई वांट टू राइट समथिंग कि मेरा हाँ ये काम हो गया. नाउ आई वांट टू राइट दिस. तो व्हाट आई विल डू, देयर इज अ एल्स ब्लॉक. कि अभी एरर नहीं आया तो क्या रन करना है मुझे. तो यू कैन राइट द प्रिंट, सेव द फाइल एंड देन यू कैन रन दिस थिंग. सो अभी समझो सब अच्छे से हो रहा है. आई एंटर नंबर 5, सेव द फाइल एंड फाइल क्लोज. तो यू कैन जस्ट इंक्लूड दिस ऑल्सो, ये थिंग एल्स करके कि इसमें ट्राई एक्सेप्ट में नहीं गया. तो ये होगा सेव द फाइल एंड फाइल क्लोज तो हमेशा ही रन होगा. सो इफ आई रन, समझो मैं एरर देता हूँ एक. सो मेरा फाइल सेव द फाइल नहीं होगा, मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए वो राइट नहीं होंगे. इट विल गिव मी एन दिस वैल्यू एरर करके आया एंड फाइल क्लोज करके आया. तो दिस पार्ट वोंट गेट एग्जीक्यूटेड इफ मैंने एरर आया तो. एल्स में नहीं जाएगा वो, नहीं तो वो एल्स में चले जाएगा.
आई होप यू आर डन। मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी का नहीं हुआ है तो शॉप में इस बीच में इंटरप्ट कर दूँ। सो दिस वॉज नॉर्मल। अभी समझो यही मैं समझो सेम ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड मेरा एक पर्टिकुलर यूज़ केस है, फॉर सम रीज़न इफ आई गेट के इक्वल टू मुझे समझो 2 आया तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि एक्सेप्शन आए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ के equal to 2, what I can do is I can raise exception. Raise exception. फिर what will happen is you will get अभी समझो इसको मैंने रन किया and I type 2. So there is what error occurred and वो हो जाएगा as it is, there will be exception, बस आ गया कि फाइल ओपन, वो एरर अकड़ में पहुंच गया वो चीज़। ठीक है, और मैंने इसमें ये नेम वगैरह नहीं दिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्लासेस जब पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक योर कस्टम क्लासेस वगैरह, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रेज द एक्सेप्शन एंड यू कैन जस्ट दिस अपना यू कैन कंटिन्यू। तो खुद का कस्टमर एक्सेप्शन रेज करना, तो यू जस्ट यूज अ रेज एक्सेप्शन कीवर्ड एंड यू डन। तो ये तो खाली कॉपी पेस्ट कर दो, 1 मिनट में हो जाएगी ये चीज़। क्योंकि वो 52 1 मिनट इज इनफ, अब तक तो कर भी लिया रहेगा। सो 52 तक आई विल गिव यू टाइम, ये कर लो। देन वी आर ऑलमोस्ट डन। मुझे ये एक एग्जांपल बताना है खाली, देन वी आर डन। सो वी कैन गो एंड दिस वन थिंग एसर्ट बताना है मुझे, खाली एक एसर्ट बताया, देन आई विल लीव यू गाइस। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर इसमें व्हाट आई विल डू इज़, किसी ने मुझे वो बताया था, एग्जाम्पल पूछा था कि अगर ये करेंगे तो रिड्यूस में अगर डिवीजन किया तो ज़ीरो एक्सेप्शन आएगा क्या। तो वो रिक्रिएट करके देखते हैं, ट्राई व्हाट आई कैन यूज़। रिड्यूस किया मैंने, रिड्यूस में मैंने लैम्बडा डाला, एक दो पैरामीटर्स लिए उसमें, देन x/y comma I put an this interval 1,3,0, and then I try to run this sorry, from import reduce and try. I have the except block and I print 0. So I get the this अभी इसमें खाली 0 किया तो it will cover 0 division error. For example 0 division error. So ये आ गया क्योंकि डिवाइड बाई 0 होगा तो यू कैन हैंडल दिस केसेस एज वेल 0 के लिए। एंड देन देर इज समथिंग नोन एज एसर्ट इन पाइथन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कहता है, दिस इज यूज इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग रेस वाला थिंग, एंड इफ यू वांट टू डीबग समथिंग, जैसे डीबगिंग में कुछ यूज़ करना है कि यू आर श्योर कि हाँ ये होता ही है। एसर्ट इज वेरी फेमसली यूज इन जावा एंड ऑल्सो डीबगिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई num equal to I have int, I input a number, enter a number, and then I want to assert that num mod 2 equal to 0, an exception except किया, then except में print not an even number. एंड देन व्हाट आई विल डू, ट्राई करता हूँ। अभी समझो मैंने दिया कि 1 दिया, सो इट विल गो, ये क्या करेगा, ये 2 है कि नहीं देखेगा। समझो 2 होता है, 2 mod 2 इक्वल टू 0, सो इट विल डू नथिंग। बट अगर वो नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ कंसेंट, तो व्हाट इट विल डू, इट विल गो इन एक्सेप्शन एंड दिस। सो इसको अगर समझ नॉर्मली अगर प्रिंट किया एसर्ट num mod 2 equal to 0 and I put it in try catch, इसको भी try डाला and I just accept the exception and print it, accept exception as e, and I print the exception, print e. So रुको एक से नंबर लेना पड़ेगा, num equal to 1 लिया तो नो होता है प्रॉब्लम, अगर मैंने 2 लिया तो
प्रिंट में एक्सेप्शन में क्या क्यों नहीं है? एसर्ट में गया, एक सेकेंड। टू में नॉट एन इशू, वन में गया, वन किया मैंने, तो ये तो किया, वन में प्रिंट एक्सेप्शन है, सी किया मैंने, नॉट, शुड बी एन एरर। ट्राई किया, नम इक्वल टू वन किया मैंने, एसर्ट किया, ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग एरर। ठीक है, आई विल हैव टू सी, एक सेकेंड। मैंने इधर नम लिया, नम में इनपुट, enter a number, and then for mod 2 equal to 0, and then I accept this as exception, and then I get print not a number, so this works. This is working, I don't know exception की print नहीं हो रहा है, assert is not showing my error, ठीक है। so ये ठीक है, exception as ये नहीं हुआ, तो you can do this, and assert के लिए you can this also print खुद का thing, example 45 है, give a number, so इधर अगर समझो खुद assert करना है, try except में मैंने नहीं डाला, so let me see, एक सेकेंड, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल निकाल के करता हूँ। मैं इधर एक्सेप्शन के बिना डाल के दिखाता हूँ, एसर्ट किया मैंने, देन आई हैव, अभी मेरा समझे मार्क्स है, डिक्शनरी, मार्क्स एक डिक्शनरी है, एंड देन आई प्रिंट द लेंथ, मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 0, आई एसर्ट, एंड देन आई डू, तो आई विल गेट एन असर्शन एरर, एक असर्शन एरर थ्रू करता है। एंड अगर मैंने समझो खुद का ये मैसेज लिखा, लाइक लिस्ट इज एम्प्टी, सो लिस्ट इज एम्प्टी करके असर्शन एरर में आने, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो ब्लैंक देता है। तो इसमें एक्सेप्शन में इफ़ आई एसर्ट समथिंग इट विल गिव मी दिस ब्लैंक, बट अगर ई का मैसेज जो रहता है इधर, जैसे जीरो डिवीजन में भी राइट समथिंग, सो बाय डिफॉल्ट इफ आई डोंट पास एनीथिंग इट विल गिव मी ब्लैंक एरर एसर्ट में। सो एसर्ट इज यूज इन डीबगिंग, अगर समझो खुद का कुछ ये रहेगा, लोकल पे रहेगा तुम लोग, एंड इफ यू राइट पाइथन माइनस, यू कैन जनरेट अ डॉट पी वाई ओ फाइल, पाइथन में देर इज समथिंग नोन एज पी वाई ओ फाइल, तो पी वाई ओ फाइल में इफ यू रन द एसर्ट थिंग इट विल इग्नोर द एसर्ट पार्ट, वो खाली इग्नोर कर देगा। So this are the only things I wanted to talk to them. So किसी को कुछ डाउट है तो let me know. You can copy, and if you don't have any doubt you can leave.